Somalia, a Muslim country located on the Horn of Africa next to the Indian Ocean. Somalia अफ्रीका की सबसे ईस्टर्न मोस्ट कंट्री भी है. But what comes to your mind when you hear the word Somalia? Is it the beautiful beaches, the hospitable people, or is it just the pirates, the kidnapping, the bombings, etc. that the media forces us to see? सोमालिया ट्रैवल करने के लिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ की ट्रैवल एडवाइजरीज अगर हम देखें तो उसमें साफ साफ बोला गया है कि किसी भी प्रकार की विजिट आप सोमालिया में अवॉइड करें और चाहे कितनी ही मजबूरी या इमरजेंसी हो आप सोमालिया ट्रैवल ना करें. यहाँ तक कि यूएस की ट्रैवल एडवाइजरी में तो ये भी मेंशन किया गया है कि अगर आप सोमालिया जाने की डिसाइड कर ही लेते हैं तो जाने से पहले आप अपने बच्चों, पेट्स, प्रॉपर्टी और बिलोंगिंग्स की कस्टडी का पेपर वर्क और प्लानिंग करके जाए. और ये तक कहा है कि जाने से पहले अपनी फैमिली के साथ अपनी आखिरी ख्वाहिश भी शेयर कर ले. Somalia, one of the most dangerous places in the world. Suicide car bomber and gunman stormed a popular hotel. And every second person you see there, whether they're armed or not, has an AK-47. 2 Americans are among the at least 20 people killed in an attack in Somalia. अभी तक सोमालिया को हमने सिर्फ मीडिया और जर्नलिस्ट की नज़रों से देखा था, पर अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सोमालिया एज ए टूरिस्ट. अभी अगली सुबह हो गई है 25 दिसंबर की. सुबह के बजे है 10. हमारा प्लान था सुबह 8:30-9 बजे निकलने का होटल से, पर रात को कुछ दिक्कतें हो गई थी लैपटॉप में और मेरे कैमरा की माइक में, तो वो फिक्स करने में काफ़ी टाइम लग गया और मैं सुबह 4-5 बजे सोया. पिछली रात भी आप जानते जैसे कि मैं नहीं सोया था, तो मैंने मेरे गाइड को मैसेज छोड़ दिया था कि भाई हम 1 घंटा डिले कर लेंगे आज का. तो पर जैसे तैसे जल्दी से तैयार होके भी हम निकल रहे हैं. पीछे वो गार्ड्स बैठ गए बंदूक के साथ गाड़ी में, और अभी बस हम अपने होटल से निकल रहे हैं और देखते हैं आज हम कहाँ शायद फिश मार्केट जाएंगे, लाइट हाउस जाएंगे, जो चीज़ें हम देखेंगे. लेट्स सी. आर्किटेक्चर इटालियंस. ये जो आप देख रहे हो ऊपर, ये जो स्ट्रक्चर सा बना हुआ है ये इटालियंस ने बनवाया था यहाँ पे कॉलोनिज्म के टाइम पे. ये देख लो भाई, सोमालिया के स्कूल कुछ ऐसे होते हैं. ये यहाँ का सबसे बड़ा सेकेंडरी स्कूल है. स्कूल के बाहर भी चारों तरफ फेंसिंग है जैसे आप देख सकते हो. आज फ्राइडे है तो सोमालिया में फ्राइडे का दिन वीकेंड होता है और छुट्टी होती है और सारी दुकानें, मार्केट्स यूजुअली बंद होती है, इसलिए सड़कें आपको इतनी सुनसान दिख रही होगी और लोग बाग कम दिख रहे होंगे. पर आमतौर पे इससे ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे. यहाँ का पेट्रोल पंप एक okay. You will see a lot of queue of trucks. Really? Yeah, you see that. Yeah, you will see that. What do they carry? They want to carry the products from the seaport, Somali seaport. Okay. The seaport. Then they deliver until the Kenya, Ethiopia, okay. and others. ये जो सारे ट्रक खड़े हैं, सारे सी पोर्ट की लाइन लगी हुई है. यहाँ का सी पोर्ट जैसा मैंने आपको बताया, सोमालिया कोस्ट लाइन अफ्रीका की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है. लगभग 3000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है. और जो मोगादिशु का सी पोर्ट है वो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी सामान उधर से आता जाता है.
तो ये सारा सामान इन ट्रकों में लोड होकर अब जाएगा अफ्रीका की और कंट्रीज जैसे कीनिया, तंजानिया, इथियोपिया, जगह जगह। We are near now to the gate of the seaport. You will see. Okay. Should I stop recording? No, you can. You can. Okay. Here is a screen. Okay. आमतौर पे जगह जगह रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ती है सोमालिया में, पर इस एरिया में थोड़ी अलाउड है, तो चेक पॉइंट पे मैंने रिकॉर्डिंग बंद नहीं करी। ओके, ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट? ये सी पोर्ट की दीवार है, ऊपर इस पे फेंसिंग हो रखी है और यहाँ पे मेन गेट ओके, ये सी पोर्ट का मेन गेट है। आर वी गोइंग टू एंटर फ्रॉम डिफरेंट गेट? ऑलराइट। tu marido que vive tipo Okay. location where the ministers, Oh, parliament is, mid court is, okay. everything is there. So we will say stop and record, stop, stop. ओके, नो वरीज। ये जो भी यहाँ का इलाका है काफ़ी इनका वीआईपी एरिया है। In that area you will see the British embassy. ब्रिटिश एम्बेसी। ओके You will see the next one. ओके। no esa यहाँ पे मंत्रियों के, मिनिस्टर्स के, पार्लियामेंट के, ऑफिस होल्डर्स के। coronavirus The coronavirus pandemic hospital. दिस हॉस्पिटल? This one. ओके। And this is the British embassy. ये यहाँ की ब्रिटिश एम्बेसी है मेरे लेफ्ट में, That's one. सोमालिया की। ये ग्रे से कलर की जो आप देख पा रहे Used हो, to be. It's not. अब नहीं है, ये पहले थी। ये वाज इट डिस्ट्रॉयड? Yeah, it's absent for. तो अभी ये कुछ ऐसी दिखती है। It's not working. और आगे एक और चेक पॉइंट है। The high court. ये सोमालिया का हाई कोर्ट है, मोगादिशु का, आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट में। तो कुछ ऐसा है सोमालिया। आप लोगों को घर बैठे मैं मोगादिशु, जो कि सोमालिया की कैपिटल है, उसकी सैर करा रहा हूँ। और 1991 में यहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था। अभी काफ़ी कंट्रोल में चीज़ें, पर अभी तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। कुछ बच्चे खेलने लग रहे हैं साइड में। फ्राइडे का दिन है और आज छुट्टी है, तो इसलिए आपको ज़्यादा लोग दिखेंगे नहीं सड़कों पे, और दुकानें And here बंद ही मिलेगी। it's called Shanghai Old City. शंघाई ओल्ड सिटी? Yeah, it's called this district. ओके। ये इलाका जो है, इसको शंघाई ओल्ड सिटी बोलते हैं। Was living. ओके। इधर चाइनीज लोग रहते थे, तो इसलिए इस जगह का नाम शंघाई डिस्ट्रिक्ट रखा हुआ है, या फिर शंघाई ओल्ड सिटी। Now we come the fish market. You see? ओके। तो अभी हम फिश मार्केट के अंदर एंट्री ले रहे हैं, और अभी चेक पॉइंट है, तो एक बार मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा। हम फिश मार्केट में आ गए हैं और अभी गाड़ी से उतर रहा हूँ। Logo. ओके। And this is the Benadir, this region. This is the logo of the region. ऑफ द रीजन? Of this region. ओके। It's called Benadir region. बनादिर, Region. इस जगह को बनादिर रीजन बोलते हैं, और इस रीजन का ये लोगो है इधर। This is the seaport. और ये सी पोर्ट है, The Mogadishu seaport. मोगादिशु का पॉपुलर सी पोर्ट। आप सामने देख पा रहे हो कि बड़ी बड़ी शिप्स खड़ी है, Okay. और ये इंडियन ओशियन है। So you wanted to go down and see? Or start with the market? लेट्स स्टार्ट विद द फिश मार्केट फर्स्ट। या वीडियो की अगली 3 मिनट फिश मार्केट की होने वाली है, और अगर आपसे ज़्यादा खून खराबा या फिर एनिमल स्लॉटर नहीं देखा जाता, तो आप वीडियो को 3 मिनट आगे स्किप कर सकते हैं।
It's turtle. It's टर्टल टर्टल ये टर्टल का मांस है भाई। और अभी हम फिश मार्केट में आ गए हैं मोगादिशु की। that one is shark. Yeah, that's it. Shark. This is a shack. The shack, yeah. بيفرح على المجرى. Thank you, brother. It's a big fish market. Okay. It's a big fish market. Yeah, Hindi, India. मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हाँ जी। बहुत बहुत अच्छा है इंडिया। मछली मच्छी थैंक यू शार्क स्मॉल शार्क ये छोटी शार्क है इंडिया आमिर खान तो भाई ये मार्केट थी मेरे पीछे आपने जैसा कि देखा और मेरा भी मन थोड़ा कच्चा हो रहा था बनाते टाइम बहुत ज़्यादा ही खून खराबा हो गया था तो अभी हम वापस गाड़ी में बैठ रहे हैं कि हम वेयर आर वी गोइंग नाउ टू द बीच या वी कैन हैव अ लुक ऑलराइट तो ये सामने सी पोर्ट है और ये बीच आप इसे कह सकते हो इंडियन ओशियन है इधर ही साथ में मोगादिशु का फेमस सी पोर्ट है सोमालिया का सबसे पॉपुलर बड़ी सी आप शिप्स खूब सारी देख पा रहे होंगे और यहाँ पे काफ़ी कचरा वगैरह पड़ा है और इधर ये मेरे ख्याल गंद डिस्पोज करते होंगे अपना सारा We get a walk? Yeah. Okay. ये जो आप देख रहे हो पीछे ये सारा डिस्ट्रॉयड पार्ट है सोमालिया का मोगादिशु का ये डिस्ट्रॉय हो गई थी सिविल वॉर के टाइम में ये दोबारा रीबिल्ड होने लग रहा है और धीरे धीरे बन रहा है पर ये पार्ट अभी डिस्ट्रॉयड है यहाँ पे आपको कोई कुछ अबैंडन बोट्स दिख रही है ये पास में सी पोर्ट है तो वहाँ पे जो बोट्स वगैरह मेरे ख्याल से ख़राब थी या जो भी अबैंडन है वो इधर रखी है ये सब यहाँ पे कुछ नज़ारे हैं यहाँ पे लोग रह रहे हैं सारे मेरे को घूर रहे हैं
थोड़ा कम जैसा से एरिया है पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अभी हम चलते और आगे आपको शेयर कराते हैं। Hello, boss. How are you? Anta. This is our boss here. Hello sir. So welcome. وقلينا كذا. Okay. ما شاء الله عمرك صاعد. ما شاء الله. मैंगोज This is the lighthouse mango. यहाँ के आम काफ़ी पॉपुलर है और ये भाई कुछ मैंगोज बेच रहे थे काफ़ी बड़े हैं। थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया, टेक केयर। Go. India? Yeah, I speak English. Yeah, I'm visiting. Where are you from? Oh, lovely. Which part of the US? Michigan. Lovely. My sister lives in New York. Okay, mashallah. You're Somali? Yeah. Amazing, man. Nice to see you. You live here? Yeah, I live in the West. Can you tell us like about the locality or something for my video? And now you have Bandera, which is this place all like fishermen on the boats are down here. You bring the fish here, go to one of those carts to the fish market. ये यहाँ पे फिश मार्केट है एक और सी पोर्ट है, यहाँ से फिशेज आती है। They make the boats on the other side. Okay, उधर बोट्स बनाते हैं। Are those boats abandoned? The boats which I just saw. No. Another one you will see inside. They're fiberglass, yeah, they own people. Man, your accent is really nice. So you pretty much American. Can you go with us until the boats? Yeah, down here. Yeah. Thanks, bro. Okay. एक बोट बनाने लग रहे हैं। बोट की अभी शुरुआत है, फाइबर से और कुछ पत्थर वगैरह रखे हैं। ये तैयार हो जाएगी होगी, ये बोट कुछ ऐसी लगेगी इन बोट्स की जैसी। ये तैयार बोट पड़ी है और ये भी बनने लगे। What's your name? Anwar. That's me. I'll text and send you the link of my site. Then maybe we can do that. Thanks, man. Take care. You too, bro. Hello. This is the lighthouse. This is the one of the famous our currency. Inside our currency you get this building. तो ये सोमालिया का एक नोट है, इस पे लाइट हाउस बना हुआ है, आपको शायद क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। ये पीछे वो फेमस लाइट हाउस है मोगादिशु का। थैंक यू। ये 500 साल पुराना लाइट हाउस है और ये भी सिविल वॉर के टाइम डिस्ट्रॉय हो गया था। काफ़ी पॉपुलर हॉटस्पॉट है ये टूरिस्ट का और मोगादिशु के लोगों का। ये काफ़ी फेमस जगह है। साइड में कुछ बोट्स बन रही है और 4 बोट्स खड़ी है और उधर बच्चे नावों में नहाने लग रहे हैं, बीच में नहाने लग रहे हैं। तो अभी हम उधर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है।